So, hello everybody, and a very good evening to all. So, as I can see, most of you haven't filled the dot form. आप में से काफी लोगों ने डॉट फॉर्म नहीं भरा है. शायद आप सभी ने मिस कर दिया है. तो फॉर ऑल डाउट फॉर्म हमारा डिस्क्रिप्शन ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में ही है. हम वहां से फिल कर सकते हैं. एंड इन द मीनवेल अगर किसी को क्लास से पहले कोई डाउट है, so he can ask Balakrishna sir and we will be clearing your doubts. So if you have any doubt, just write it in the chat box or raise your hand and we will be unmuting you. Satak, can you provide me that answers form? Yes, sir. I am sharing it with you also. Hello. Angad, what is this? I'm not able to understand. Go charting session link. We did not get on rollover group. If it can kindly be shared on the WBA. There is no any go charting session link. Do you want me to share the video of how to set the chart? Sarthak, you're on mute. Session which happened on the Angad, it was a onboarding session. Onboarding session. How to set up the charts and all. Nothing else. सैयद जी मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको भेजूंगा.
तमीम जी, for everybody link is already posted in the group. आप थोड़ा ग्रुप को देखना चाहिए. प्लीज कीप वाचिंग ग्रुप मैसेज को देखना चाहिए. कौन सा ग्रुप? सर आपको तो एक ही ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप. Jay, sir will be learning this chart as a well only market profile. Jay ji, I am not able to understand your query. Sir, can you share that link once again? So this is showing like this. I need an answer for. Jay. So I I've will got be learning everything. so I've got few of the responses from the doubt form. I will be just sharing my screen so that we can take all of the doubts. Yes, sir. So Prashanti ji has, sir, my Go chatting is not showing live data. So If you are not showing a live data, you must purchase the data. First one, send the Go recordings of the Go chatting. Go chatting recordings is already posted in group. It is your responsibility that you must be checking the WhatsApp group. WhatsApp group is for the communication to post all these links, all these video links. Please check your group. yeah, Next, Muktaza Habibji. yes, sir. When will we have live trade session in the day? Uh, right now, market movements are not good. Wait for some time. We will teach you order flow और delta as well. आपको सभी सिखाएंगे, एक ही दिन में सभी सिखाने के लिए नहीं होगा. There are 10 sessions. You must have patience. Can IB be calculated for the MCX stocks only? Sir, trading MCX is different. I will teach you that. Pratmesh. Next, Janardhan. Joined your bootcamp just today. Will able to follow the understand today class. Janardhan, please watch the previous class video. Okay, then you will be able to understand. Everything, every day I will be teaching you a new thing. Don't ask me every day, वो teach करते हैं क्या, ये teach करते हैं क्या, वो कब करते हैं, ये कब करते हैं. There will be a syllabus. Accordingly, syllabus I am going. Okay, please don't keep asking questions like children. आपको एक एक दिन का नया नया सब्जेक्ट होगा, उसको सीखना चाहिए, बाद में नेक्स्ट स्टेप आएगा. In a single day, you cannot understand anything. Yes to everyone, आप सभी के साथ हमने शेड्यूल शेयर कर रखा है. ऑल्सो यू कैन सी द व्हाट्सएप ग्रुप डीपी. उसमें आपके टॉपिक्स भी लिख रखे हैं हमने. विद व्हेन विल द लाइट बूट कैंप सेशन. तो आप सब वहाँ से अपने टॉपिक्स दे सकते हैं. ऑल्सो जिनके अगर लास्ट क्लास मिस हुई है, आई विल जस्ट रिकमेंड देम कि आप सब रिकॉर्डिंग्स देख लीजिए. वी हैव ऑल्सो प्रोवाइड यू ऑल विद द रिकॉर्डिंग्स. तो आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं उनकी एंड यू कैन कंटिन्यू विद सर. Okay, so I guess these were the only doubts for today. Okay. So for everyone, I am telling you, because you have joined to uh, like MBBS, and so many of you are willing to do first day surgery, first day class, first day surgery, and you started to say, sir, I am not able to give injection, I am not able to do surgery. That will not be possible.
These classes will be 10 days and 10 classes. Don't talk anything. Keep listening to each and every class. Keep asking the question only on the class you learn. आपका क्लास में आप क्या सीखा है उसके ऊपर क्वेश्चन करो. डोंट आस्क मी वो टीच नहीं किया, वो कब करते हैं, इसके ऊपर ट्रेड कब लेना, कैसे लेना, वो मैं सिखाऊंगा, वो मेरा काम है. सभी सिखाने का मेरा काम है. ओके. Gopi, we will be posting the books in the group in another 2 to 3 days. Still, some people are joining. Okay, so after 2 to 3 days, some books will be posted. Meanwhile, please go through the group description and also keep watching the group updates. Group updates को आप देखना चाहिए. We have posted all the links. 75% not at all seen that. थोड़ा आप ज्यादा उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए. It is your duty. Okay. Now, what was the topic? The last class we have discussed at the end. End में हम क्या discuss किया था? We will exactly start at 7:05. 7:05 को हम start करेंगे because still people are joining. बीच में आपका कोई doubt है तो आप पूछ सकते हैं. When is the class starting and where are the recording? Sarthak, I hope you can answer all this. Yes, I was just answering. Can you to open the group? Sarthak, एक काम करो. There is another 10 minutes. Please open the group. आप कहाँ पे कम्युनिटी ऐड करना करके लिंक पोस्ट किया है, कैसे उसको ऐड करना वो दिखाओ. Still so many people have not joined community. कम्युनिटी में आप ज्वाइन नहीं किया तो आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा. ओके, डिस्कशन नहीं मिलेगा. इट इज योर ड्यूटी टू फाइंड आउट द लिंक्स इन द ग्रुप टू ज्वाइन. सभी आपको दे के रखा है. You can share your screen, Sarthak. Yes, sir. So is my screen visible? नहीं. Oh, okay, just a minute. Share it. Sir, or else I will do this. I guess I am not able to share my screen. I am just logging out and rejoining the meet. Just give me a few seconds. Okay. Yes, your screen is visible, Sarthak. Yes, sir. So to everyone जिसको डाउट आ रहा था कि हमें रिकॉर्डिंग्स कहाँ मिलेंगी, so आप सभी सर्कल कम्युनिटी में ऐड हो चुके होंगे. ऑल ऑफ यू बीन एडेड टू द सर्कल कम्युनिटी. अगर हम यहाँ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको बालाकृष्ण सर का कोर्स मिल जाएगा, द होली ग्रेल ऑफ ट्रेडिंग विद बालाकृष्ण सर. आप यहाँ पे आके सारी रिकॉर्डिंग्स देख सकते हो. एंड एज यू कैन सी सारी रिकॉर्डिंग्स यहाँ पे अपलोड हो चुकी है, सारी लाइव क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं. तो अब यहाँ पे आके सारी लाइव क्लासेस देख सकते हैं और आपको यहीं पे असाइनमेंट्स और डिस्कशन भी मिल रहे हैं. तो आप यहाँ पे भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं. ऑल्सो आपको हमने व्हाट्सएप पे भी डाउट फॉर्म दिया है, आप वहाँ पे भी अपने डाउट सेशन पूछ सकते हैं. ऑल्सो आपको अपना शेड्यूल भी यहीं पे दिख जाएगा, तो आपको जो क्लास के क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे वो भी आप सबको यहीं पे दिख सकता है. जैसे I suggest everyone to post your doubts in the community discussion. That is created for the doubts only. आपको doubts उधर ही डालिए. Because you have enough space there, you can also post your charts to ask your queries. देखो, this is how you can post your queries. छोटा सा एक फॉर्म में आप कुछ भी फिल नहीं कर सकते. This will be better. This community discussion is for discussion. कुछ भी क्वेश्चन आप इधर पूछ सकते हैं, आपको पता नहीं चला तो. ओके, better to reduce your doubts in the this link and then try to post your doubts in the community. ये ऑल्सो एविडेंस जैसे आप देख सकते हैं काफी लोगों ने डाउट पूछे हैं. In the next class, from the next class onwards, I will not be conducting any doubt sessions here. So better to post here. It will be visible to everyone. एक बंदे का डाउट दूसरे बंदे का भी हो सकता है. If you post there, somebody other three to four people can also be solved their doubts. एक ही डाउट से सभी लोगों को सॉल्व हो जाएगा.
यस टू एवरीवन, आप यहाँ पे अपने डाउट डाल सकते हैं, जैसे कि हितेश जी ने अपना डाउट डाला है और सर ये सारे डाउट क्लियर भी करते हैं। ऑल या सो आपको रिकॉर्डिंग्स और कम्युनिकेशन आपका सब यहीं पे हो जाएगा। सो आई होप, और जिसने अगर अभी तक सर्कल कम्युनिटी ऐड नहीं करी है तो आई हैव आल्सो शेयर्ड द लिंक मल्टीपल टाइम्स, तो आप सब वहां से दोबारा देख सकते हैं रिकॉर्डिंग। अगर उसके बाद भी आपको कोई डाउट आता है। सार्थक, just a small request. Just go to WhatsApp, एक बार लिंक पे शो करो उसको, और उस पे क्लिक करो, और कैसे लॉग इन करना जस्ट विद इन 5 मिनट्स बता दो. Yes, I will just share the screen so show them. रमेश यादव, रिकॉर्डिंग्स विल नॉट बी फ्रॉम प्रीवियस बैच. आपका एवरी बैच के बाद 24 आवर्स के पहले वो अपडेट किए करते हैं. Every recording of the every your class will be uploaded after 24 hours. एडमिन जी, पहला आपका नेम रीनेम करो. यू कैन Yes. रीनेम योरसेल्फ प्लीज. तो या फॉर ऑल ऑफ यू, यहाँ पे इसके आपका जो ग्रुप है, बी जून होली ग्रेल विद बालाकृष्ण सर, तो आप यहाँ पे अगर अपने ग्रुप के डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे तो आपको लाइव सेशन की भी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी और ऑल्सो आपको डाउट फॉर्म मिल जाएगा. ऑल्सो अर्लियरली भी मैंने सारे शेयर कर रखे हैं यहाँ पे, आपको सर्कल कम्युनिटी का लिंक भी और ऑनबोर्डिंग सेशन की वीडियो भी. अगर आपको कोई भी डाउट है कि सर्कल कम्युनिटी कैसे ज्वाइन करनी है, कुछ भी डाउट है, तो यू कैन जस्ट सी द रिकॉर्डिंग. एंड इवन आफ्टर दैट अगर कोई आपको डाउट है तो यू कैन जस्ट रीच मी, सो आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू. यहाँ पे आपको डाउट फॉर्म भी मिल जाएगा. आई जस्ट रिक्वेस्ट एवरीबॉडी कि आप सर्कल कम्युनिटी में अपने डाउट लिख दीजिए, और या फिर आप डाउट फॉर्म में भी अपने सारे डाउट डाल सकते हैं. तो और अगर आप इसके, इफ यू विल गो टू द ग्रुप आइकन, you can also see the whole calendar here along with the titles, along with the topics which will be discussed in the class. So आप यहाँ पे अपना सब कुछ देख सकते हैं. त्रिभुवन सिंह in the chat saying, sir, today class community link not received, please. So I cannot answer understand some queries. Can you answer this? यस सर. सर नागराज जी, कम्युनिटी लिंक आप अगर बोल रहे हैं तो सर्कल कम्युनिटी बस आपको एक बार ही प्रोवाइड किया था हमने लिंक, वो आपको बस ज्वाइन करना था, उसमें अकाउंट बनाना था. उसके बाद आपको सर्कल कम्युनिटी एक्सेस है हमेशा के लिए. सो यू कैन जस्ट लॉग ऑन द सर्कल कम्युनिटी और आप वहाँ पे अपने सारे शेड्यूल्स वगैरह, अपनी सारी रिकॉर्डिंग्स आप वहाँ पे देख सकते हैं. द लिंक इज सेम फॉर एवरी क्लास और लिंक हमेशा के लिए वो सेम ही है. ऑल्सो आई विल बी जस्ट शेयरिंग द कम्युनिटी लिंक इन द चैट बॉक्स ऑल्सो, अगर किसी को कुछ डाउट आ रहा है, मतलब मैं दोबारा से एक बार ग्रुप में शेयर कर दूंगा, सो ऑल ऑफ यू कैन जस्ट गो थ्रू इट. Also, if anyone has any query regarding the general doubts, so they can just comment it in the chat box. So वो chat box में बता सकते हैं. Regardless, अगर किसी को अगर कुछ और डाउट है तो बालाकृष्ण सर से वो भी पूछ सकते हैं, as we will be starting the class soon. Have you posted the link of this in the chat? कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दो एक बार सार्थक. त्रिभुवन सिंह जी, आप, आई होप योर क्वेश्चन इज क्लियर. त्रिभुवन सिंह परिहार, सर आपका क्वेश्चन क्लियर हो गए. Yes sir, राजकुमार जी, the queries time is not mentioned in the schedule. राजकुमार जी, सारी क्लासेस हमारी 7 to 9 ही हो रही होंगी
All the classes will be from 7 to 9 only. So Recording video not playing. Soma Gir says recording video is not playing. Sir, I will play. There is no problem from anything in the website. Website में कोई problem नहीं है. Maybe if any problem occurs from your side, please check from your side. येस टू एवरीवन, मैं एक बार रिकॉर्डिंग चला के भी दिखा देता हूँ सबको जो जो को प्रॉब्लम आ रही है. सो द रिकॉर्डिंग इज वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन. सो एज यू कैन सी रिकॉर्डिंग हर उसकी चल रही है. आई गेस आई विल जस्ट चेंज माय इंटरनेट कनेक्शन. So yeah, regarding, please conduct a separate doubt session with the class starts today. सर वे बिफोर एवरी क्लास हम डाउट सेशन लेते हैं सो दैट अगर किसी को कोई भी डाउट्स आए वो क्लियर क्लास में तो दे कैन बी क्लियर्ड as much as possible. Also, yes sir, we will be starting the class very soon. Tamim ji, you will find the community link in the WhatsApp group only. I have shared the WhatsApp group and the session again. You all can hear me clearly and my voice and video is clear. So एक बार सब बस मुझे बोलिए कि हम ट्रेडिंग with Bala. Bootcamp एक में वीडियो प्ले कर रहा है. It is playing. यहाँ पे आपको उसमें क्या आपको दिख होंगे जो हम लोग होंगे. अदर देन दिस सारे लॉग हैं, आपको उनमें नहीं जाना है. See, this is playing. There is no problem from TFU side. Please find anything wrong from your side. So let me go ahead, start the class. Without Zoom ID required. As Kirtimala is also watching, it is playing. Okay, so let me start. Last कहाँ पे रुका था? Where did we stop? Anybody remember? Charts. Okay. So we stopped here. Profiles, right? Have you started IB? Good. Some people can remember. Now let us start with the IB. ध्यान से सुनना. Each and everything is very important, very new to you. So give most your interest towards this. Okay. The first thing which we are starting with is the initial balance, IB. It is not IB, it is IB. Whenever I see IB, some people say, sir, IB hai kya? IB hai kya? IB nahi. Initial balance, IB. IB matlab, we call this as a steering of the market profile. Because to drive any car, you need a steering. Steering is very important to show the direction, to see the direction, to take you in the direction. आपको डायरेक्शन में लेके जाने के लिए आपका व्हीकल में स्टीयरिंग वेरी इंपॉर्टेंट है. जैसे ट्रेडिंग में डे को डिसाइड करने के लिए डे कितना बड़ा बनता है, कितना छोटा बनता है, and what will be the direction of the day, what will be the size of the day, what will be the movement of the day. To understand that, initial balance is the steering for the day. What is the meaning of initial balance? IB, in short term IB, initial balance is first 1 hour of the day. दिन का पहला 1 घंटे क्या होता है? Starting 1 घंटा, that 1 hour is nothing but the initial balance. That initial balance will be shown by 2 bars. पहला A bar और B bar 2 बार बनता है ना. You can see 2 bars will be the first 1 hour. The highest high of the 2 bars, lowest low of the 2 bars will be the initial balance.
कभी IB बनता है, कभी पहला 2 कैंडल बनता है, 2 बार बनता है, उस दोनों कैंडल का, दोनों बार का हाईएस्ट हाई एंड लोएस्ट लो will be the range of the IB. Lowest part of the IB and highest part of the lowest part of the 2 bars and highest part of the 2 bars will be the IB range. We call this as a IB range. इधर देखो ये बार है, ये B बार है. The highest point will be this, the lowest point will be this. Now this is the size of the IB, initial balance. Okay, so what is the importance of initial balance, that all we will see. पहला initial balance is very important because initial balance means it is the balance of the previous day activity. आज का दिन में क्या क्या एक्टिविटी होना है, क्या क्या एक्टिविटी होना है, पहला 1 घंटे में क्या एक्टिविटी होगा, ऑल दोस आर द पेंडिंग एक्टिविटीज ऑफ द प्रीवियस. कैसे somebody has taken trade in BTST, STBT, and somebody was missed their trade, they wanted to enter today as soon as market opens. Not only in Nifty and Bank Nifty, in every stock of Indian market, सारे इंडियन मार्केट में कितना स्टॉक है, उस स्टॉक में ऐसे ही काम चलेगा. where people are waiting from yesterday to take trade today. Somebody has come at 3:35, market was closed, was supposed to take trade, and he has a fear of missing. So immediately the next day, as soon as market opens, he try to enter into the trade. Maybe it will be short trade, long trade, unwinding of the trades, taking in new trades, hurry burry trades. Did you understand? Initial balance is nothing but the activity of the pending activity of the previous day. It related to previous day. So we will not be involving in the initial balance. Initial balance में हम नहीं घुसते. In reality, that is not the movement of the market. Market में movement नहीं होता है वो. It is the settlement of the previous day. Settlement कैसे होगा? तो हारी रे होगा वो. टेंशन में होगा. There will not be clarity. तो IB में कौन होगा? Most of the time IB में रिटेल ट्रेडर्स ही होगा. Most of the time retail traders will be participating in the IB because smart money will never immediately book their profits, immediately they will not rush, immediately they will not wind up their positions, they will never rush into the market to buy immediately because they already predefined their levels. They wait, whenever the price reaches they will take the trade. But पहला 1 घंटे में only retail traders will rush in to take trades. The trades can be pending orders, STPT, PTST, selling the profitable orders, taking the new trades, whatever. So keep it all this 1 hour for these retailers to do their activity. After that they will settle down. हमें लोगों को जैसे when you go to WWF, okay, WWF में क्या करते हैं लोग? One of the opponent will be keep sitting or keep getting hitted. अरे मारो भाई, कितना मारेगा आप, मार दो मार दो मार दो मार दो, चुपके रहेगा. And one person will be keep hitting, तो हिट करके 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 वो थक जाएगा. He will be exhausted. So that is the chance we are giving to the retailers to expand. कितना आप ट्रेड करना है कर लो, कितना मार्केट को ऊपर लेके आना है या कितना लेके जाना है आप कर लो भाई. They started to do their work and at a point of time they will be exhausted. कैसे exhausted? Retail traders will be always having a limited investment. Retail traders के पास कभी भी limited investment होता है. आप कितना डाल सकते हैं? 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ मैक्सिमम. मैं कितना डाल सकता हूं? Maybe 1 करोड़, 2 करोड़. Somebody can take some thousands, somebody can some hundreds. तो हमारे पास कितना पैसा था 1 घंटे में हमारा रिजल्ट आ जाएगा. हम पैसे डाल के कितना लेके जा सकते. We have a limited capacity of moving the market, but we have hundreds
thousands, lakhs, and crores of money. But smart money will be having thousands of crores of money. So that is the difference between retailers and smart money. Smart money try to avoid to enter into the first 1 hour. They will let the retailers to handle. बाद में रिटेल ट्रेडर्स एक रेंज बनाएगा. That range is nothing but the capacity of the retail traders. That range is nothing but the capacity of the retail traders. So let me show you an example. मैं आपको एक example दिखाऊंगा. Now take for example, today is the 20th, right? 21st. This is the 21st. 21st में क्या हुआ? It is the Reliance first candle, second candle. Okay, this is the first candle high and second candle low. ये 33 minutes टाइम फ्रेम है. इसके अंदर कितना एक्टिविटी हुआ, ये सभी रिलेटेड टू रिटेलर. बाद में इसके बाहर कितना एक्टिविटी हुआ, दिस इज रिलेटेड टू स्मार्ट मनी. आई विल टेक दिस टू निफ्टी में लेके आऊंगा आपको. तो 21st दिस इज द फर्स्ट 1 hour. पहला 1 घंटे का रेंज. फर्स्ट 30 minutes, another 30 minutes. The lowest of these two bars, highest of these two bars will be IB. तो IB के बाद में क्या होगा? This is the activity of the smart money. This is the activity of the smart money. इसके अंदर कहाँ पे भी जाओ, this is the 20th में कहाँ भरा है IB has created here. This is the range of the IB. First candle, second candle, third candle, fourth candle. 4 कैंडल IB के अंदर है. बाद में इसके बाहर कितना एक्टिविटी होगा, ये स्मार्ट मनी का होता है. ओके, दिस इज द मैक्सिमम एक्सपेंशन क्रिएटेड बाय रिटेल ट्रेडर्स. रिटेल ट्रेडर्स का हाथ में इतना ही होगा एक्सपेंशन करना मार्केट. इतना मूवमेंट ही कर सकते. इफ यू कैन सी, दिस इज द मैक्सिमम मूवमेंट दे कैन डू. व्हेन यू सी द FIS मूवमेंट कितना बड़ा है, आप इधर देख सकते हैं. इधर हमारा मूवमेंट है रिटेल ट्रेडर्स का, FIS का मूवमेंट है. दिस इज द फर्स्ट 1 hour मूवमेंट ऑफ द रिटेल ट्रेडर्स एंड रेस्ट इज द स्मार्ट मनी मूवमेंट्स. अभी क्या मैं सिखा रहा हूं, इसके ऊपर द मीनिंग ऑफ दिस इज डोंट डू एनीथिंग इन द फर्स्ट 1 hour. दैट्स ऑल. पहले आपको हम चिल्ड्रन को क्या बताते हैं, इफ यू हैव अ किड यू से, अरे मेरा बेटा गाड़ी को मत चलाओ, पहले साइकिल को चलाओ, राइट? someday the day will come when he also ride a bike. so that day has not yet come to you. अभी आप सिर्फ साइकिल को चलाना है, गाड़ी को अवॉइड करना है. so this is the initial balance, this is the story of the initial balance. now OTF on retail traders. What is the meaning of OTFs? OTFs are nothing but other time frame traders. Other time frame traders. Simply you can call this as a smart money. Smart money. RTs are the responsive traders. These are the retail traders. These are the retail traders. Retail traders क्या करते हैं? We have a limited knowledge, limited money. We go to so many institute को जाते हैं. इंस्टीट्यूट में क्या सिखाते हैं उसको फॉलो करते हैं.
Most of the institutes will be teaching you the supports, resistances, moving averages, like stochastic and RSI, all this. It means if you are using this, you are responding to this indicators. Indicator क्या बोलेगा उसको response करते हैं. When price reaches to support, you will be buying. कब बाई करते हैं? कभी वो सपोर्ट में आते हैं तभी आप बाई करते हैं. When price is breaking the resistance, then you are buying. When price is reaching the resistance, you are selling. It means you are responding. You are responding to some levels. That levels can be, that levels कहाँ पे response करते हैं responsive traders? Yesterday high, yesterday low, yesterday value area high, yesterday value area low, yesterday value POC, and fifth, sixth weekly high, weekly low, monthly high, monthly low, and trend lines, stochastic, RSI, moving averages. These are the locations of your response. आप ऐसे ही ट्रेड करते हैं ना. Till now you are trading in this way, and all the retail traders are the responsive traders because we respond to the some of the reference levels. And OTF traders are the people who create these levels. ये लेवल्स को क्रिएट करने वाला OTF ट्रेडर्स. सपोर्ट कौन क्रिएट करेगा? मार्केट का बॉटम कौन क्रिएट करेगा? टॉप कौन क्रिएट करेगा? They are the OTF traders. They are called as the initiative traders. They initiate the market move. मार्केट मूवमेंट को इनिशिएट करते हैं FIS and DIS, स्मार्ट मनी. हम सिर्फ सपोर्ट पे रेजिस्टेंस पे रेस्पॉन्ड करते हैं. दैट इज द रीजन वी आर रेस्पॉन्सिव ट्रेडर्स. दे आर द इनिशिएटिव ट्रेडर्स. This is the picture shows the initiative activity of the buyers and sellers. Initiative traders will be always initiating their trades beyond the references. उधर कोई सपोर्ट नहीं होता है, कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है. If you can see, OTF traders are initiating their up move beyond yesterday's range. कल का हाई लो के बाहर वो ओपन कर रहा है मार्केट को और उधर से ऊपर लेके जा रहा है. They are not waiting for the support to come and then respond. Now here people, smart money is initiating their trades beyond yesterday's range. If you can see this, they are selling beyond yesterday's value area. It means they are the initiative activity traders. They create the references. This is the retail traders activity. Retail traders क्या करेगा? वेट करेगा, कभी सपोर्ट में आएगा, कोई रेजिस्टेंस में आएगा तो ट्रेड लेगा. This is the activity done by retail traders when price from the top approaches to the value area low, because those people are finding value area low as a support. इधर पे आप देख सकते हैं value area high as a resistance. From bottom price is reaching to the top and this is where it is finding the resistance. Why it is finding the resistance there? Retail traders are started to sell there. They are responding. Now you must understand कहाँ पे responsive activity हो रहा है. That is the activity of the retail traders. First support is created by other time frame traders or smart money. Second, the pullback is created by retail traders. We are the people who are responding to the previous support. कुछ भी आप स्टोरी बोल सकते हैं, इसको कुछ भी स्टोरी बना सकते हैं, but in reality this is the truth. Okay, now you got clarity of the OTF traders or smart money or this retail traders.
Now let us understand what is poor highs and poor lows. Poor high and poor low is nothing but, if you see the total composite profile in any side, whether upside or downside, if you find out the extension of only two TPOs, which can be in single direction or can be side by side, we call that as a poor lows or poor highs. For example, इधर देख सकते हैं साइड बाय साइड दो टीपीओस है, बॉटम में दो ही रहना है. शांतनु, OTF means other time frame traders. इधर सिर्फ दो ही प्रिंट्स है. If you can see this, here also there are only two prints. टॉप में देखो, here also there are only two prints. This is called poor highs and poor lows. ऊपर में आ गए तो हम उसको बोलते हैं poor highs. If it comes in the bottom, we call this as a poor low. In this profile, you can see only two TPOs extended in a single direction. एक ही direction में, here we can see side by side, but here one after other, only two. Then also we call this as a poor low or poor high. It can be on top, it can be on bottom. Beyond two, that will not be a poor low or poor high. समझो तीन ओवरलैप हो जाएगा इसे. It is not a poor high. If this will be extension of three TPOs, this will not be a poor high or low. Okay, I hope you got the clarity. Now, what is the significance of poor high and poor low? Poor low and poor high को हम क्यों यूज करते हैं, तो इसमें क्या हमको बेनिफिट है? Those who are asked for the link, I shared in the Telegram already. Telegram link already share किया है मैं chat box में. Okay. Now, what is the benefit of knowing poor highs and poor? What we do, we consider this as a very important levels within another 5 days. The validity of this poor highs and poor lows will be there another 5 days. इसका वैल्यू आपको 5 दिन तक रहेगा. कैसे? दिस वर्क्स एज ए मैग्नेट. ये मैग्नेट जैसा काम करेगा. कब करेगा? सपोज समझो इधर पे पूर लो है, दिस द पूर लो, एंड हियर प्राइस वेंट अपसाइड एंड इट इज कमिंग डाउन साइड एंड नियर बाय टू दिस आपको कोई सेल सिग्नल मिल गए. नियर बाय, मॉडरेटली नियर बाय टू दिस आपको कोई सेल सिग्नल मिल गए. नाउ इन दैट सेल सिग्नल यू कैन टारगेट द प्राइस टू दिस पूर लो बिकॉज दिस वर्क्स एज ए मैग्नेट. Suppose this is the poor high. Within 5 days, nearby, कहाँ पे भी आपको buy मिल जाएगा. You get a buy signal here. Price has to move up. Now you can target the price as a poor high because nearby में it should be moderately nearby. नहीं सर, बहुत दूर है इधर से, 500 पॉइंट्स टू 600 पॉइंट्स का ऊपर है, तो इधर से सेल आ रहा है सर. कैन आई टारगेट दिस टू दिस poor low? No. It should be moderately nearby. बहुत दूर से वो टारगेट आपको नहीं होगा because prior to this there are so many references that will work as a support. नियर बाय मतलब इसका प्रोफाइल के अंदर, ये प्रोफाइल के अंदर प्राइस आ गए, फिर भी इधर आपको सेल बन गए, दिस कैन अट्रैक्ट एज ए टारगेट.
poor highs and poor lows will be considered as a targets, not the reversal areas. This is the poor high of the day. So next day price opened inside. We call this as open action. वो आपको आगे आगे आने वाला सेशन में आपको पता चलेगा. Now price is attracted towards this. This is nearby. So once you have any buying setup here, आपको कोई buying setup है तो आप इसको target कर सकते हैं. You must be booking your profits here. And this is the poor low. The price has attracted. Once again, it is a poor high. So price is reaching here. Once again, a poor high. The price is reaching from here. It is a poor high once again. So if you have any buying setup, that will be reaching to the resistance. So once again, this is a poor high and poor low, poor high and poor low. Pricing touching this, price को touch कर रहा है. This poor low is not touched it. अभी इसका touch नहीं किया है. So it will be valid for another 5 days. That's all. इसका touch किया है. There should be a minimum of two TPOs. There should be a minimum of 2 TPOs, maximum of 2 TPOs of the side by side or extension. Extension में भी आपको सिर्फ 2 होना चाहिए. This is the poor high because this has 2 extensions. That's all. ये भी poor low है. This is also poor low. Poor high, poor low magnet can work in IB time range also other IB. It works anytime, not only in IB. It works anytime. I told you, whenever you find a buying and selling pattern and it is nearby to the poor highs and poor low, then you can target to the poor highs and poor low as a target. Yes, once it touches, it value will be over. Yes, ये एक ही बार काम करेगा. ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जैसा काम नहीं करेगा. Obviously, we need only 2. Beyond 2, we will not be considering. Okay. Next is a single print. Single print का मतलब क्या होता है? Whenever the profile is forming, profile form करते हुए टाइम पर, in the composite profile, you can see a single print. There is no other overlapping has happened. इसके ऊपर कोई overlap नहीं हुआ है, सिर्फ single print create किए है. That means price was trading in the sideways, then it started to move up, then started to come down, and at some point of time it has come and then it went up.
Now there is an area where price has traveled alone. एक ही टाइम फ्रेम के अंदर इधर ट्रैवल किए हैं, बाद में इसके ऊपर ओवरलैपिंग कोई भी नहीं है. It is the overlapping of this is the overlapping of this bar, but here there is no overlapping. Here there is no overlapping. So we call this as a single print. We call this as a single print. We call this as a single print. इसको बोलते हैं हम single print. If you consider this area, this is a single print area. तो सिंगल प्रिंट एरिया को हम क्या करते हैं, कैसे यूज करते हैं? We will be considering single print area as a support and resistance for the future, and this will be valid for infinite. मतलब if the price is trading above this area, started to come down, this area will work as a support area. Price will reverse from here. In future, if the price is trading in below this single print, started to come inside this, and this single print work as a resistance area. This is how you will be using. इसको हम ऐसे ही यूज करते हैं. Single print areas are highly momentum areas. If you can see this from here to here, this is the single print area. ऊपर से प्राइस नीचे आए तो ये सपोर्ट जैसा आपको काम करेगा. इट कैन मैक्सिमम कम टिल हियर एंड देन इट विल रिवर्स. नीचे से प्राइस ऊपर गए तो दिस विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस एंड मैक्सिमम इट कैन गो टिल हियर, देन इट विल रिवर्स. You can plan for a reversal trades at these locations. That is the benefit. इसके बाद में कभी भी आएगी क्या, नहीं आएगी. See, this has worked as a support. Here it has worked as a resistance. It is violated, but once again it has came down. Here is a single print. Now, तो कौन सा सिंगल प्रिंट स्ट्रांग होता है, कौन सा सिंगल प्रिंट वीक होता है? When you see a good gap, ये एक आपको एक बड़ा गैप देखने को मिलेगा. Just like this. Just like this. Okay. Now that will work as a strongest support and resistance. आपको छोटा छोटा एक गैप मिल गया, छोटा, with just a one TPO. One TPO as a single print TPO. The significance of this TPO, this area will be lesser. इसका स्ट्रेंथ कम होता है और इसका स्ट्रेंथ बढ़ता है. Sir, no criteria for putting finding out previous high, poor highs and poor low. No criteria. There should be a two maximum overlapping side by side or two extensions towards top. That's all. Very simple. कितना क्राइटेरिया है उतना मैं बोलता हूँ, एक्स्ट्रा नहीं बोल सकता. 5 days सिंगल प्रिंट को 5 days नहीं है. आई टोल्ड यू इट इज इंफिनिटी. कभी प्राइस इधर आएगा वो सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसा काम करेगा. यू आर नॉट एक्टिवली लिसनिंग टू मी.
Next, we will be starting very important topic, very important topic, which decides your trading style, which decides your entries, which decides your um, analysis type. Okay, so that is called types of days. We have seen profile shapes, that is different. Types of days, we are going to discuss types of days. Either pay very important 6 types of days are there. We have 6 day types. In that, 4 day types are tradable. Next 2 days are non-tradable. These 4 day types are useful for current डे, आज के लिए, आज ट्रेड करने के लिए हम इसको जानते हैं. और रिमेनिंग 2 वी स्टडी दिस 2 फॉर द फ्यूचर काम के लिए. First 4 will be studying to trade for us in the same day. करंट डे में हम ट्रेड लेने के लिए हम ये 4 दिन को डिफरेंट ऑफ 4 डिफरेंट डेज को हम सीखते हैं. और अदर लास्ट 2 डेज इसको हम फ्यूचर में यूज करने के लिए सीखते हैं. Now these days, understanding of these days will give you the targets. This will give you the concept of entries, concept of targets. कब ट्रेड एंटर होगा, कब एक्टिवेट होगा, कब टारगेट बनेगा, कितना टारगेट बनेगा, मार्केट में बड़ा मूवमेंट कब मिलेगा, कब छोटा मूवमेंट मिलेगा, कब मार्केट में ट्रेड करना है, कब नहीं ट्रेड करना है, वो सभी टाइप्स ऑफ डेज को समझने से आपको समझ में आ जाएगा. Now let us take a exercise to understand the power of the IB. IB तो हम समझ गए, तो IB को हम कैसे यूज करते हैं. How do we use this IB, initial balance, in our regular trading? To know that, first of all, we will be understanding the power of the IB. कैसे? Please everybody open your calculator. आपका कैलकुलेटर को ओपन करो. What do we do? Go to the daily chart. Daily chart of the symbol which you are going to trade. समझो आज मैं रिलायंस में ट्रेड करना चाहता हूँ, टाटा पावर में ट्रेड करना चाहता हूँ, टाटा मोटर्स में ट्रेड करना चाहता हूँ. आप डेली चार्ट पे चले जाओ. इन द मॉर्निंग मे बी एट 8:30 बिफोर द मार्केट ओपन और टिल 10:15 डेली चार्ट पे चले जाओ और एड 10 डे ATR इन योर चार्ट. चार्ट में 10 डे का ATR लगाओ और ATR लगा के कीप योर कर्सर ऑन यस्टरडे. कल का डे के ऊपर आपका कर्सर रखो. देन यू कैन सी द 10 डे ATR वैल्यू. ओके, दिस इज द एक्सरसाइज. तो इसको मैं चार्ट के ऊपर दिखाऊंगा. अब कीप दिस डेली टाइम फ्रेम. समझो मैं रिलायंस को ट्रेड करना है. रिलायंस को ट्रेड करना है आज. दिस डे आई वांटेड टू ट्रेड. व्हाट आई डू, मॉर्निंग आई विल बी having a plain canvas chart and go to study के अंदर जाओ. एवरेज ट्रू रेंज, एवरेज, there is an average true range here. ATR बोलते हैं. You can type ATR. ATR टाइप कर दो, वो आ जाएगा टॉप में. क्लिक ऑन दिस ATR. ATR पे ऊपर क्लिक करो, नीचे आ जाएगा वो. ओके, इसको
इसके ऊपर क्लिक करो अभी, then it will open. Now you can see, just click on this settings के ऊपर जाओ, this will be default 14 रहेगा, इसको 10 करो और अप्लाई करो. Now the ATR value will be 10 day ATR. ओके, तो 10 डे ATR लगाए, आप कुछ नहीं करना है, कीप दिस डाउन, इसको ऐसे डाउन ही रखो. दिस डे वी आर गोइंग टू ट्रेड, सो वी नीड द ATR ऑफ यस्टरडे, कल का ATR चाहिए हमको. कीप योर कर्सर ऑन यस्टरडेज कैंडल, कल का कैंडल के ऊपर कर्सर रखो, एंड देन यू मस्ट सी द वैल्यू हियर, इधर पे वैल्यू देखना है, ATR का वैल्यू कितना आएगा. इफ आई एम कीपिंग द कर्सर हियर यस्टरडेज कैंडल, नाउ टेल मी व्हाट इज द ATR वैल्यू. ATR वैल्यू कितना आ रहा है, व्हाट इज द ATR वैल्यू, 60.82 exactly, डन. 60.82. क्या करना है, ATR डेली इक्वल्स 60, अरे 60.82. यू कैन आल्सो मेक इट ए राउंड फिगर भी कर सकते हैं आप, छोटा मोटा. ओके, 68 60.82, इसको 61 कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. हाँ 61 राउंड फिगर. अभी क्या करना है, आप find out the 30% of this daily ATR. Tell me the 30% of this 61. 61 का 30% कितना होगा, 18.5. 18.3 होगा, नियरली यू कैन मेक इट 18.5 राउंड फिगर. 18.3 आए तो उसको 19 मत करना, 18 इज ऑलरेडी स्मॉलर. ओके, और यू कैन मेक इट 18.3, नो प्रॉब्लम. स्टार्टिंग में करेक्टली करो. Once again, calculate the 60% of this 61, 36.6, 36.6. ओके, तो आप क्या करना है, फर्स्ट डेली ATR को लेना है, उसमें 30% कितना आएगा, 60% कितना आएगा, ये आप कैलकुलेट करके रखना है. एंड यू मस्ट सी द टुडेस IB रेंज. IB रेंज देखना है आज का. टेक फॉर एग्जांपल, मैं इसको डेली चार्ट में रखा हूं, आई विल टेक दिस टू 30 मिनट्स. 30 मिनट्स में बनाए, एंड टुडे इज द 21st में मैं IB रेंज देखूंगा. आई विल बी सीइंग द रेंज ऑफ द IB. यू मस्ट लुक एट द मार्केट प्रोफाइल में देखना है. मैं इधर आपको कैंडलस्टिक भी दिखा रहा हूँ. नाउ कैलकुलेट 2953 minus 2926. 2953 minus 2926. 27. Yes. Now IB range is 27. IB range equals 27. आज का IB रेंज मतलब 1 घंटे में प्राइस हैज क्रिएटेड द रेंज, और प्राइस स्ट्रेच्ड, एक्सपेंडेड 28 पॉइंट्स. उसका पूरा दिन का रेंज होगा 61 रुपीज. द कैपेसिटी ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ द प्राइस इज मैक्सिमम 61 रुपीज पर डे एंड एन एवरेज. तो पहला 1 घंटे में ही आपको 27 रुपीज का मूवमेंट हो गए. नाउ टेल मी, दिस 27 रुपीज कम
within 30% or beyond 30% or between 30% to 60%? Between 30 to 60. Between 30 to 60. Oh, that is the formula to understand the power of IB. आप इधर देख सकते हैं, इधर देख सकते हैं. If it comes below 30, निकाल दूंगा इसको. If it comes below 30, आज का IB रेंज 30% का नीचे आए तो हम बोलते हैं उसको नैरो IB. नैरो IB. If it comes between 30 to 60%, we call that as a moderate IB. If it comes beyond 60%, we call this as a wide IB. Why do we classify? To understand अभी प्राइस मूवमेंट होने के लिए कितना बचा है. जाए, यू मस्ट टेक ए डेली ATR. डेली ATR में ATR लेना है 10 डेज का ATR में. तो आज क्या करना है, कल का कैंडल के ऊपर कर्सर रख के देखना है ATR वैल्यू कितना आएगा. सो यू कैन सी दैट इज गेटिंग 61. ये डेली है, डेली में इतना आ रहा है. आज क्या करना है, पहला 1 घंटा वेट करना है. यू मस्ट वेट 1 hour ऑफ द डे. देन यू टेक ए रेंज ऑफ द फर्स्ट 1 hour. दैट विल बी 27. रिलायंस में 27 IB रेंज इक्वल्स 27. नाउ लुक एट द 30% ऑफ 61 कितना होगा और 60% ऑफ 61 कितना होगा. 30% of 61 will be 18.3. 16% of this 61 will be 36.6. Now today's IB range, IB value will fall between 18.3 का भी बड़ा है और 36.6 का भी छोटा है. So it falls between 30 to 60. We call this as a moderate IB. आप कहां पे ट्रेड करना है उसका ही लेना है. IB 27 कैसे आए, तो पहला 30 मिनट का 2 कैंडल का हाई लो लेना है. फर्स्ट 1 hour रेंज, ये घंटे में कितना लेंथ बनाए है उसको देखना है. दिस इज द फर्स्ट कैंडल, दिस इज द सेकेंड कैंडल. ये दोनों कैंडल का लोएस्ट और हाईएस्ट लेते हैं एंड दिस इज द रेंज. जगन्नाथ जी, शांतनु, व्हाट इज योर क्वेरी. स्टडी में जाना है, ATR करके टाइप करना है. ATR आएगा, वो नीचे लगेगा. गो टू डेली टाइम फ्रेम. ओके, आज क्या करना है, कल का कैंडल के ऊपर रखना है और इधर वैल्यू देखना है. इधर पे वैल्यू देखना है. दिस इज द डेली ATR वैल्यू 60.12. कल ट्रेड करना है तो आज का देखना है. टुमारो मॉर्निंग यू मस्ट बी लुकिंग एट टुडेस. इट इज 61.26. स्लाइटली बड़ा है रेंज. चंदन कुमार सिंह, व्हाट ए क्वेश्चन. Instead of 2 30 minutes candle, can I take a first 1 hour candle? Instead of taking first 1 hour candle, can I consider the 61 minutes candle? करो भाई, कुछ करो, क्या चाहिए वो करो. तो पहला 1 घंटे का रेंज निकालो, नहीं तो एटलीस्ट गो टू द रेजिलियंस. सो गो टू मार्केट प्रोफाइल. मैक्सिमम आपका काम मार्केट प्रोफाइल पे करना है. आई एम शोइंग यू द कैंडलस्टिक टू मेक यू अंडरस्टैंड. देखो आज का कैसा देखना है. कीप इट इन स्प्लिट.
स्प्लिट में रखो, स्प्लिट में रखो. The range of today's IB will be starting from here till here. So this is the high 2955 minus 2924, 30 points. It is in futures, 30 points is the IB range. पहला 1 घंटे में आप ट्रेड मत करना है, सिर्फ ऐसे देखते बैठना है. ओपनिंग is included inside the A bar. A bar के अंदर ही ओपनिंग इंक्लूड किए है. So highest high of the first 2 bars, lowest low of the 2 bars. Done. Now you understood how to calculate the IB. IB को कैसे कैलकुलेट करना आप समझ गए. This is very important. So immediately आपको पता चलना, whenever the IB range for today is lesser than the 30% of yesterday's IB, yesterday's ATR, yesterday's ATR कभी 30% के अंदर है तो नैरो IB होगा, इसके 30 to 60 हो तो मॉडरेट होगा, बियॉन्ड 60 होगा वाइड. सो उसको कैलकुलेट करके साइड में रखो. नाउ वी आर गोइंग टू प्रेडिक्ट द मार्केट बेस्ड ऑन IB. So now we are started to predict the market based on IB. IB is very much important to understand the further movement of the market. देखो, if the full range is 61 rupees, पहला 1 घंटा में in the first 1 hour itself the movement is 50 points. पूरा ATR का रेंज, ATR मतलब क्या होता है, every day the maximum expansion size of the candle will be added divided by 10. मतलब 10 दिन में एवरेजली कितना कितना बड़ा बड़ा रेंज मिल रहा है, कितना बड़ा बड़ा कैंडल मिल रहा है, कितना मैक्सिमम मूवमेंट हो रहा है, वो बोलते हैं ATR. The first 1 hour 50 points movement is already happened and remaining is only another 11 points. एक दिन में आप 10 रोटी खाना था 3 times per day. मतलब मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग मिला के 10 रोटी खा रहा था, और पहला मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में ही आप 7 रोटी खा लिया, अभी बचा है 3. और आप पूरा दिन में 10 रोटी खाना था और मॉर्निंग में और आफ्टरनून में आप एक एक रोटी खा लिया, सिर्फ 2 ही रोटी खाए हैं, अभी बचा है 8 रोटी. दिस इज द कॉन्सेप्ट. अब ये 8 रोटी को कितना लोग भी एक्स्ट्रा आके खा सकते हैं. There is a chance another day also you can use it, or any guest can also come and they can utilize this. There is a space for movement. Now first day of the day types is normal day. Normal day बोलते हैं. So what is the normal day? कब बोलते हैं normal day? The IB of this normal day is wide. फर्स्ट ऑफ ऑल हमको कभी वाइड IB देखते हैं. वाइड IB मतलब ग्रेटर देन 60% ऑफ द ATR. जैसे अभी मैं बोला 50 पॉइंट्स इज ऑलरेडी मूव इन 61 रेंज में 50 पॉइंट ऑलरेडी मूव हो गए हैं. इट मींस 80% ऑफ द मूव इज ऑलरेडी हैपेंड. 80% इज ऑलरेडी बिगर देन 60%. अभी बचा है जस्ट 10 पॉइंट्स. So that is IB. Now what is the meaning of this? What is the meaning of understanding this? अब क्या करना है,
we will not be trying to trade on the same day towards the trend. अभी 10 पॉइंट जाएगा, हम पकड़ते हैं ऐसे कभी भी ट्रेड मत, मतलब we don't trade for smaller remaining points. 10 रोटी पूरा दिन में खाना था, 2 ही रोटी खाए हैं, अभी 8 बचे हैं, गुड, इज अ गुड पर्सन. फुल डे में 10 रोटी खाना था, एक ही बार वो 8 रोटी खा लिए है, अभी बचा है 2 फॉर अनदर आफ्टरनून एंड इवनिंग. वी विल बी अवॉइडिंग दिस. मोस्ट ऑफ द रेंज इज ऑलरेडी कंज्यूम्ड. बाद में कुछ आप ट्रेड लेने के लिए जा सकते हैं ना, अनदर 10 पॉइंट्स बचा है, ट्रेड लेता हूं, इट विल बी रिस्की because first expansion of the market is done by retail traders. Retail traders activity and their strength will be very small, limited. बट ये लिमिटेड में आने वाला बंदे इतना बड़ा एक्सपेंशन कर दिए है. Those who should eat only 2 chapatis has eaten 8 chapatis. तो कुछ गलत है, कुछ गलत हो गया इधर. That's the reason we will not be taking trade on the same day towards another remaining movement. 60 पॉइंट में 50 पॉइंट का मूवमेंट हो गए हैं, बचा है 10 पॉइंट्स. वी विल नॉट बी टेकिंग दिस बिकॉज 8 रोटी ऑलरेडी खाली है, 2 रोटी के लिए हम फाइट नहीं कर सकते. तो क्या करना है, वाइड रेंज विल बी फॉर्म्ड. व्हेनेवर द वाइड रेंज विल बी फॉर्म्ड, आप क्या करना है, योर ट्रेडिंग स्टाइल शुड बी ट्रेड अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड at IB tops and bottoms. आप क्या करना है, यू मस्ट नो द ट्रेंड. ट्रेंड को आप समझना है. सपोज द ट्रेंड इज बुलिश and IB, पहला IB is more than 60% and was red candles. तो आप क्या करना है, you must take a trade towards the trend. towards the trend मतलब ऊपर का, ऊपर वाला. कब लेना है, at the IB tops and bottoms. अभी प्राइस कहाँ पे है, IB का बॉटम पे है. अब बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं towards trend, बट नॉट एट द टॉप. टॉप में नहीं लेना है, वो हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा. यू मस्ट बी टेकिंग ट्रेड अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड. IB टॉप्स एंड बॉटम मतलब अप ट्रेंड में रहेगा तो बॉटम में लेना है, डाउन ट्रेंड रहेगा तो टॉप में लेना है. वन मोर एग्जांपल, मार्केट इज बुलिश, मार्केट इज बेरिश. पहला 2 कैंडल बुलिश बन गए. नाउ यू विल बी वेटिंग फॉर द ट्रेड, रिवर्सल ट्रेड एट द टॉप ऑफ द IB. इधर कोई रिवर्सल ट्रेड, इन्वर्टेड हैमर, एनगल्फिंग, कुछ भी, that should be giving you a signal to sell at the top and signal to buy at the bottom when the market is bullish. That is the meaning of trade according to the trend at the tops and bottoms of the IB. Say for example, this is the day and I will take a 5 minutes. Day 20% day and I will take 2 yesterday's. कल का लेता हूं मैं. This is the 20th, right? 20th का IB को मार्क करता हूं. I will be marking the IB high and I will be marking the high and low. Now, whenever you mark the IB high and low, the first 2 candles are bearish, first 2 bars are bearish. पहला 1 घंटे bearish है. What is the trend? Trend is bullish. आप इधर देख सकते हैं, trend is bullish.
What is your activity? Your activity should be buy at IB low. IB low में आप buy करना है. Provided if you get the buying signal, कोई आपको buying signal मिला तो आप trade ले सकते हैं towards buy. Let us see what happened. 5 मिनट में जाऊंगा. We will be taking trade in the red time frame. ये कल का है. This is IB high. This is the IB low. Exactly at the IB low, towards the trend, we are getting a hammer pattern, which is the buy pattern. Exactly आप देख सकते हैं, at the support or at the IB low, you are getting a buying pattern. Now your buy will trigger above the high of this. इसके ऊपर, what is the high of this candle? 51304. Now keep it 2 to 3 points of buffer. 51305 में आपका buy entry हो गए. Buy. Now where is your stop loss? Stop loss will be low of the same candle. Same candle का low होता है. The low of this candle is 51212. Now keep 2 point buffer. 51210 will be stop loss. मतलब 105 points का risk. 105 points का risk होगा अभी. And you are taking trade at the 51305. Buy कर दिया. Because the pattern has come at the IB low. Now your target should be in the first 3 months. पहला 3 मंथ में आपका टारगेट होना है 1:1.5. If you risk 10 rupees, your reward should be 15 rupees. If you risk 1 rupee, your reward should be 1 rupee 50 paise. First 3 months. After 3 months, if you get the confidence in the first 3 months, now you must increase your target to 1:2. मतलब 10 rupees risk, 20 rupees target. 10 rupees risk, 20 rupees target. After 6 months, you must be increasing to 1:3. 1:3 को कैसे ट्रेड करना है? 1:2 को 75% को कवर करना है. रिमेनिंग कास्ट टू कास्ट लगा के 1:3 को लगाना है. This is how you must book the profits. As of now, our target is 1:1.5. Now the risk is 105 points. 1.5 मतलब 105 plus half of this is like 53 points. Now 158 will be the target. 158 from the 51 3 इसका हाई, एक कैंडल का हाई लेना है 51212. 51212 plus 158 points. 27 28 10 7 3 1 5. Your target will be 51370. तो देखेंगे वो 51370 हुआ क्या. Yes, your target is done. आपका टारगेट इधर ही हो गए. This is your target. It is done. If you keep 1:2, वो भी हो गए. 1:3, वो भी हो गए. Your targets got hit. This is how you must take trade towards the trade. Next. Now there are chances of price rotation. कभी wide IB हो गए तो the rest of the day there are chances of price rotation. कितना मैक्सिमम एक्सपैंड होना था मार्केट उतना मैक्सिमम एक्सपैंड हो गए तो देयर आर चांसेस ऑफ प्राइस विल बी रोटेटिंग. पूरा दिन में कितना 10 चपाती खाना था, एक ही बार खा लिया और रेस्ट ऑफ द डे ही विल बी रोमिंग हियर एंड देयर. सेम एग्जांपल में देखेंगे.
It was the full day. It was the full day till here. क्या हुआ market? इधर से गिरा and went up and it goes sideways. That is the meaning of this. That is the meaning of this. Is the IB low में आपको buy signal आए, ऊपर चला, but it went sideways. This is nothing but it is the chances of price rotation. Price rotation. Next, failed action trades can be taken. Failed action trades can be taken मतलब क्या होता है? Just now I have shown you a trade. That is a failed action trade. It is a failed action buy trade. Failed action buy trade मतलब क्या होता है? IB range will always work as a support and resistance. वो आपको support and resistance जैसा काम करेगा. Now price has tried to break the low and go down, but not able to clearly close below the IB low. Now went upside and closed like a hammer. It means it is a fake breakdown. That is what failed action trades. It is a failed action. The action tried to fail the low and go down, but that got failed. Now we will be taking trade towards the uptrend, towards the trend, based on this failed action trade. For time being, I will show you how that got activated yesterday. It was a fantastic trade. This is our trade candle. इसके ऊपर हमारा ट्रेड होगा. Now this candle try to break down. नीचे जाने के लिए ट्राई किया, ब्रेक डाउन करके नहीं हो पाए. Now close inside. If I switch on this imbalance को मैं switch on करके आपको दिखाऊंगा. Now clearly आप इधर देख सकते हैं. Seller trap. This is called seller trap. Whenever this support is breaking, so many people are came to sell. They came to sell, started to sell. Now there is no follow through of this their selling. Sell कर दिया तो उसका फेवर में प्राइस नहीं चला. Instead it went upside. Then started to go up. Now these people इतना बड़ा 25K got trapped. Trap हो गए. Whenever price started to go in opposite, these people will be suffering in losses. So they started to exit, then price started to go up. Exit मतलब कितना लोग सेल किया था वो अभी बाई करने लगा. Now tell me if you have any queries on this. इसके ऊपर कोई क्वेरी है तो आप बोल सकते हैं. Venkat, you can understand as soon as the support started to break, so many sellers started to sell. 25K sellers started to sell, but they did not get the profit. Instead, they get the stop loss hit. Vamshi, it will not be it will not be same. It will not be same.
What is the doji candle represents? There is a way to detect this trap? Yes, sir. By seeing the chart. Okay. So we will take a small break of 5 minutes and we will come back. Sci-tech. You can use 5 minutes. You can use 1 minute. You can use 2 minutes. You can use 3 minutes. Purbadas, please watch the first session. Then you will understand second session. Snehal, what is that 479 IM01? राजेंद्र सर, आपको कहाँ चाहिए उधर ले लो, नो प्रॉब्लम. आपको कहाँ पे चाहिए उधर ले लो. Madam, that is the formula we have right now. Okay. There is a chances of price rotation. You must take a trade called failed auction trades. Okay. These trades will be low risk and high reward trades.
these trades will be low risk and high reward trades. So right now you have seen the risk of only 100 points and the price has moved almost 500 points, 600 points. आज का एग्जाम्पल में आपको क्या दिखा, what is the size of the movement happened today from 51300 to 51700, 400 points of move. Risk reward is 1:4. What is the IB range? Okay. तो ये IB रेंज को आप कैलकुलेट करना चाहिए. इज द एग्जांपल. आप क्या करना है, यू मस्ट टर्न दिस इनटू डेली. डेली में शिफ्ट करो. टर्न दिस इनटू डेली. तो कल ट्रेड करना है तो कब का देखना है, कल ट्रेड करना है तो कब कब का देखना है. इफ यू वांट टू ट्रेड यस्टरडे, कब का देखना है, प्रीवियस डे, इसका देखना है. नाउ ATR इज 965. ATR is 965. Okay. 30% and 60% कितना है. 30% will be almost 320 आ सकता है, right? 322. 290. 290 and 60% will be 480. Now turn this into 30 minutes. 30 minutes को टर्न करो इसको और कल का IB को देखो. $51730 minus $51240. 51730 minus 51230 means 500 points, almost 500 points. 500 points, right? IB is the 500 points. Kal ka, yesterday IB range is 500 points. Now these 500 points are within 30%, are between 30 to 60%, are beyond 60%. It is the 580, 480 बनाया मैंने. Yes, Sandeep, right? It is 580. It is the moderate. Yes, Shantanu, right, right. Now it is moderate. Moderate में कैसे ट्रेड करना मैं बताऊंगा. Same step. Even in the moderate, it is in the same way. तमीम जी, ये 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम है. 30 मिनट्स. Let me show you example first. It is the normal day. Normal day मतलब this is the normal day. IB में इधर फेक ब्रेकआउट दिया और अंदर आ गए. Now you got a sell signal. From here price has come to till to the IB low. IB low तक आ गए. इधर आप देख सकते हैं B. This is the A. Lowest low of the first two bars and highest high. This is the IB.
छोटा ब्रेकआउट हुआ और वो सस्टेन नहीं किया, अंदर आ गए। जस्ट नाउ आई हैव शोन, आईबी के ब्रेक डाउन करने के लिए एक छोटा कैंडल ब्रेक डाउन किया और हैमर बन गए एंड यू गॉट ए बाय सिग्नल। सेम इधर आईबी हाई में ब्रेकआउट करने के लिए ट्राई किया और अंदर आ गए, यू गॉट ए सेल सिग्नल। दैट इज कॉल्ड द फेल्ड एक्शन ट्रेड। नेक्स्ट इज नॉर्मल वेरिएशन डे। पहला था नॉर्मल डे, सेकेंड वन इज द नॉर्मल वेरिएशन डे। नॉर्मल वेरिएशन डे में आईबी विल बिकम मॉडरेट। मॉडरेट मतलब 30 to 60% का बीच में रहेगा। जस्ट लाइक वी हैव टेकन राइट नाउ द एग्जांपल ऑफ 500 पॉइंट्स। 500 पॉइंट्स इज बिटवीन द 30% एंड 60%। दिस विल बी मॉडरेट। कल का आईबी मॉडरेट बैंक निफ्टी। तो कभी मॉडरेट रहेगा तो कैसे ट्रेड लेना है? यू मस्ट टेक आईबी ब्रेकआउट ट्रेड। यू मस्ट टेक आईबी ब्रेकआउट ट्रेड। संदीप जी, मैं अभी क्या बोल रहा हूं उसके ऊपर ध्यान देना है। ओके, I will not be teaching 56. Okay, I will be teaching only this. IB breakout का ट्रेड लेना है। मतलब क्या है? फर्स्ट एंड सेकेंड बार विल बी द IB रेंज। पहला 1 घंटे का रेंज हो गया IB। यू मस्ट बी लुकिंग फॉर द IB ब्रेकआउट ट्रेड। वो भी टूवर्ड्स द ट्रेंड देखना है। यू मस्ट लुक एट दिस ट्रेड टूवर्ड्स द ट्रेंड। समझो इसका पहला ट्रेंड वाज बुलिश। इफ द ट्रेंड वाज बुलिश, नाउ IB हैज फॉर्म्ड, आईबी ब्रेकआउट हो रहा है, तो ये ब्रेकआउट ट्रेंड के तरफ होना है। इफ द आईबी इज बुलिश, तो यू एक्सपेक्ट अ ब्रेकआउट टुवर्ड्स अपसाइड और डाउन साइड। क्या साइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप? वेयर डू यू एक्सपेक्ट? अपसाइड, एग्जैक्टली टुवर्ड्स द ट्रेंड। कल इन एस्टरडेज एग्जांपल क्या हुआ था? क्या अपसाइड में ब्रेकआउट दिया? क्या अपसाइड में ब्रेकआउट दिया क्या? नो। when this breakout has not occurred, when this breakout has not occurred, एक मैं आपको सीक्रेट बताऊंगा। in the uptrend, IB low will be act as a reversal area towards the trend। मतलब whenever the market is bullish, तो पहला 1 घंटे में फॉल होगा ना, तो मैक्सिमम फॉल विल एंड एट द 1 hour लोएस्ट पॉइंट। 1 hour लोएस्ट पॉइंट में ये सेलिंग एंड हो जाएगा और उधर से रिवर्सल बनेगा। if fall happens in uptrend और डाउन ट्रेंड में रेज हो गए पहला 1 घंटे में, the first 1 hour high will be acting as the highest point of that reversal area। मतलब इधर से रिवर्सल होगा। yesterday we did not get a trend trade। ट्रेंड के तरफ हमको ब्रेकआउट नहीं मिला, बट वी गॉट दिस। दिस इज द सीक्रेट। when there is a trend, establish a trend, and you see the present day is going opposite towards the trend, reversal will happen at the end point of the 1 hour। रेगुलरली नॉर्मल वेरिएशन ट्रेड डे में आप आईबी ब्रेकआउट देखना है। वो नहीं मिला तो नो ट्रेड, देयर इज नो ट्रेड। आईबी ब्रेकआउट शुड बी अकर। आईबी ब्रेकआउट मतलब कोई बार आईबी ब्रेकआउट किया तो आप कैसे ट्रेड ले सकते हैं? your entry will trigger once again, price has to cross the high of this breakout bar। ये ब्रेकआउट के बार के ऊपर प्राइस मूवमेंट हुआ तो your buy will trigger। now immediately your stop loss will be वो ब्रेकआउट बार के नीचे। now please remember, नोट बोल रहा हूं, नोट this is not the trade entry। you should not
You should not directly take trades here. It is the concept of understanding when it is ready to expand the price. मतलब मैं बोल रहा हूं इधर बाई ट्रिगर हो गए, इट मीन्स यू विल नॉट बी डायरेक्टली टेकिंग द ट्रेड. उधर आप जाके डायरेक्टली ट्रेड लेके द स्टॉप लॉस लगा के नहीं बैठते, बिकॉज इन नॉर्मल वेरिएशन डेज द लेंथ ऑफ द बार्स विल बी वेरी. आपको टारगेट नहीं मिलेगा, टारगेट छोटा रहेगा, आपका रिस्क रिवार्ड नहीं रहेगा. बट वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट. आवर एक्सटेंशन गॉट एक्टिवेटेड. अभी प्राइस एक्सटेंशन होना है ना, वो एक्टिवेट हो गए. अभी कहां तक जाना है? तो वी हैड 100%. 100% में आईबी बना है जस्ट 50-60%. अभी बचा है अनदर 40%. तो इधर प्राइस जाने के लिए रेडी हो गए हैं. दैट इज द मीनिंग ऑफ एक्टिवेशन हियर. इधर बाय एक्टिवेट हो गए, इसका मतलब टू ट्रैवल अनदर 40% 50%, प्राइस इज गेटिंग रेडी. एंड दैट शुड नेवर ब्रीच द लो ऑफ दिस. इसका लो ब्रीच हो गए तो ये हमारा प्लान क्या है, दैट विल फेल्ड, वो फेल हो जाएगा. विदाउट ब्रीचिंग द breakout bar, it should be keep moving towards its 100%. So that is what here range extension should happen. आज range extension should happen towards 100%. Range extension should happen towards the trend. वो कभी भी towards the trend ही होगा. Risk is below the range extension bar. RE मतलब range extension. Range extension मतलब ये ब्रेकआउट ट्राई किया ना, ये ब्रेकआउट बार को हम बोलते हैं रेंज एक्सटेंशन बार. इसका ऊपर आपका एंट्री, इसका नीचे स्टॉप लॉस. समझो इट वाज अ डाउन ट्रेंड, ब्रेक डाउन बार का लो ट्रिगर हुआ तो आपका एंट्री, इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस. नाउ टारगेट्स विल बी रेफरेंसेस. इधर आपका एंटर ट्रिगर हो गए तो आपको रेफरेंसेस मिलेगा, प्रीवियस डे का, मे बी प्रीवियस डे, डे बिफोर प्रीवियस डे का रेफरेंसेस. व्हाट इज दैट? वैल्यू एरिया लो, POC, value area high, those are will be the targets for your trade execution. A maximum expansion can happen the 1x of the IB. 1x of the IB मतलब IB का साइज रहेगा 55 पॉइंट्स. समझो 55 पॉइंट्स. टोटल ATR रेंज इज 100 पॉइंट्स. पहला एक घंटे में 55 पॉइंट्स का एक्सपेंड हुआ है. अभी बचा है 45 पॉइंट्स. 45 पॉइंट्स. नो वी कैन कंसिडर सेम कितना 50 पॉइंट का 55 पॉइंट्स का एक्सटेंशन हो सकता है फ्रॉम हियर. अनदर 55 पॉइंट्स एक्सटेंशन. साइज ऑफ द आईबी 1x ऑफ द आईबी मतलब आईबी का कितना साइज था उतना ही एक्सपेंशन अपसाइड, स्टार्टिंग फ्रॉम द हाई ऑफ द आईबी. नाउ आई विल टेक यू एन एग्जांपल. आपको एक एग्जांपल लेता हूं. कल का कितना था? इट वाज 760 पॉइंट्स. 7. What is the yesterday's range? This was the, sorry, 965. 965 was the total range of this day. IB का रेंज कितना हुआ था? 500. IB हाई ब्रेकआउट हो गए तो from here to another 500 expected. Another 500. Total become 1000. If you can see the range, it is almost 965. It is equal to 1000. Did you understand? पूरा दिन का ETR वैल्यू विल बी 965, which is almost equal to 1000. तो पहला एक घंटे में 500 पॉइंट्स का मूवमेंट हो गए हैं और इसका ऊपर ब्रेकआउट हो गए तो अनदर 500 पॉइंट्स का एक्सपेक्टेशन कर सकते. Now targets will be the references of the previous days or the
1x of the IB, which one is earlier. मैं सभी लोगों को बोल रहा हूँ, जय जी प्लीज करंट टॉपिक में क्या है उसके ऊपर ध्यान देना है. मोस्ट ऑफ यू पीपल स्टार्टेड टू से रिपीट सर, रिपीट क्यों करना है? You are not giving your mind on the present topic which I am explaining. So you started to say repeat. If I started to repeat here, other people will feel bored. Once again, you are getting the recording of this video. You started to watch it. There you will feel bored. आपको उधर भी बोर लगेगा, अरे क्या इतना रिपीट कर रहे हैं, मुझे समझ में आ गए. Please give attention to the current topic, current thing which I am discussing. देखो दीपक सचदेव इज आस्किंग व्हाट इज आर बार. आर बार मतलब क्या है, मैं बोल दिया. तो कभी आप क्लास में आप बैठे हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ ईच एंड एवरी पॉइंट को सुनो, आप सुनने के लिए बैठे हैं. यू विल बी स्विचिंग ऑन योर लैपटॉप, उधर देखना इधर देखना, चाय पीना खाना. इट्स जस्ट 2 hours, दैट्स ऑल. So in another 10-20 minutes I will be finishing. RE मतलब range extension. See, so many people are answering in the right way. Means these people are attentively listening. Okay. Now I will give you something, some hint here. आपको एक important चीजों को आपको बताऊंगा. It was the yesterday's IB, कल का IB. Starting from here to here. You can ask me, sir IB हाई ब्रेकआउट किया है ना, तो फिर भी क्यों नहीं चला? IB high has broken by a bar, but its follow through has not happened. When does the target will activate? Whenever the high of this will breach. This is the IB breakout bar. इसका हाई का ब्रेक नहीं हुआ है. It means the buy towards 1x target is not activated. Point number 1. इसका buy activate क्यों नहीं हुआ? The reason price has traveled 500 points down. Once again from the bottom, another 500 points up traveled. Now people got exhausted. When people got exhausted, the price movement will not happen most of the time. Now you understood the normal variation day. Normal variation day में आपको it will between the 60 to 30 to 60% के बीच में IB will be moderate. Moderate में you must expect the IB breakout towards the trend. तो कभी भी ऐसा उल्टा पलटा हो गया तो मैं क्या आपको अभी बताए, वो प्लान को अप्लाई करना. You must apply the plan which I have told right now. This is the normal variation day. This is the A and this is the B. The breakout happened in this high broken. Now price has reached exactly 1x of the size of the IB. Done. So target is done. This is the normal variation day. Next one is trend day. See, it is very easy to understand. पहला आपको नॉर्मल डे आएगा which is beyond 60%. नॉर्मल वेरिएशन डे आएगा 30 to 60%. Now it is the trend day, which is very important. Here the IB is narrow. Narrow कब बोलते हैं? When IB is less than 30%. 10 रोटी पूरा दिन के लिए दिया था, अभी 1-2 रोटी खा के बैठे हैं.
Another 8 rotis are still available. अभी 8 रोटी खा सकते हैं पूरा दिन. There is still a chance of expansion. There is more space. Okay, IB will be narrow. ट्रेंड डे में कभी भी आपको IB नैरो हो गए तो आप उस दिन पे ट्रेंड डे को एंटिसिपेट कर सकते हैं. You can anticipate the trend day when you find the narrow IB which is lesser than 30%. That day, entry on the IB breakout. All these days will be trading towards the trend. Towards the trend ही लेना है. Suppose it is uptrend. IB has formed narrow IB, very narrow IB. Now you can expect the breakout towards the trend, and this trade should be taken. This is the suggesting a trade. IB breakout का trade लेना है. Then range extension should happen. Range extension मतलब ये range IB का extension हो जाएगा. Risk reward is same. Risk is range extension bar के नीचे. Range extension bar के नीचे आपका stop loss, इसके ऊपर आपका entry. If it is bearish, range extension breakdown bar के नीचे आपका entry, इधर आपका stop loss. So that has happened in the Reliance example which I have shown to you. आपको मैं एक Reliance का example show किया है. I'm taking daily में ले रहा हूं मैं. For today, look at the yesterday's ATR. Yesterday's ATR is 61. Okay, and today's IB 21st का IB कितना है? 2653 means 2653 25 points, right? 53 minus 26 कितना है? 53 minus 26 23. अरे 27 is right. Now 61 का 30% और 60% बताओ. 18.3. 36.6. Now 27 falls between this and this. ये दोनों का बीच में, right? Moderate is also towards the trend. Moderate कभी हम towards the trend लेते हैं. What do we do? हम इधर रिलायंस का लगा के रखा है. आप देखो चार्ट. Okay. और this is the IB low. Wait for the, ये moderate है. Moderate day and trend day is also same in trading. Trading style same है moderate day में, trend day में. You must wait for the range extension bar because it is in downtrend. You will be waiting for the IB breakdown in the D. D bar में क्या हुआ? IB breakdown किया. Now your entry will be below the low of the D is your sell, and your stop loss will be above the D bar high. आपका एंट्री ट्रिगर हुआ इधर और आपका स्टॉप लॉस लगा इधर. Now in concept the sell got activated. From here your target will be 1x or nearby references. So 1x मतलब 27 points and another 27 points. इधर से लेकर another 27 points. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TPOs. 9 TPOs मतलब 1 1 2 3 4 5 6 7 8
9 TPOs. आपका टारगेट इधर हिट हो गया, वो टारगेट इज डन हियर, your target is done. मॉडरेट नॉर्मल वेरिएशन डे में और ट्रेंड डे में ट्रेड का एग्जीक्यूट करने का तरीका सेम होता है, ट्रेड का एग्जीक्यूट करने का तरीका सेम होता है. It is not opposite trend, it is downtrend. Right now, Reliance is in pullback. Later you will understand trend, how to see the trend and all. Can we take sell trade in the from value area high? Vivek, don't go to there. Right now मैं क्या बोल रहा हूँ उतना सुनो, बाद में वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स को मैं आऊंगा. ये लो मलाई 1x of the IB, 1x of the IB, size of the IB. Pankaj Singh, yes. Sandeep Rudra, AB size. You just watch the AB size of the TPOs, you will get 9. And from here, another 9. What is the difference in trading from variation day? Okay. Now, targets are the differences. Targets are the differences. It's very simple. मैं IB को इतना बार इसीलिए आपको एक्सप्लेन किया है. IB में कितना बचा के रखेगा आपको, तो बाद में कितना एक्सटेंशन होने के लिए मिलेगा. 10 रोटी में आप सिर्फ 2 रोटी खाए हैं IB में. प्लीज अंडरस्टैंड, IB is the first activity. You just ate only 2 rotis, another 8 rotis are left out. खाने के लिए पूरा दिन में आप 8 रोटीज खा सकते हैं, but you ate all the 6 rotis in the first morning itself, remaining only 4 rotis. Sayyid, what a question, how accurate is it is. मैं क्या सिखा रहा हूं, इसको सीखो भाई. See, you are getting distracted yourself. आपका सक्सेस क्यों नहीं आता है, तब मैं क्या बता रहा हूं इसके ऊपर ध्यान नहीं देते. हाउ एक्यूरेट इट इज, इसको कौन इन्वेंट किया, उसका बाप का नाम क्या है, वो कहां से था, वो क्या खा रहा था, ये नहीं चाहिए. मैं बोलूंगा आई एम हियर टू क्रिएट यू द हाई एक्यूरेसी ट्रेड. मैं आपको हाई एक्यूरेसी ट्रेड क्रिएट करने के लिए बैठा हूं. इट इज माई जॉब. मैं क्या सिखाऊंगा उसको सीखो. आपका दिक्कत यही होगा. आई नो द माइंडसेट ऑफ द स्टूडेंट्स. मैं अभी से नहीं, आई एम टीचिंग सिंस 15 years. 15 साल से मैं सिखा रहा हूँ लोगों को. आई हैव टॉट टू द एल्डर्स, यंगर्स, एवरीबडी. ओके, नाउ द मेन डिफरेंस इज, आप नॉर्मल वेरिएशन डे में ऑलरेडी मैक्सिमम मूवमेंट हो गए हैं आईबी में, तो बचा है मैक्सिमम वी कैन एक्सपेक्ट 1x मोर. बट इन ट्रेंड डे मैक्सिमम मूवमेंट को बचा के रखा है आईबी में. इट इज लेसर देन 30%. अनदर 70% ऑफ मूव इज पेंडिंग. 70% of the move is pending. So you can expect another 30% plus 30%. 2x of the IB. इसका डबल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, which is inside our ATR range. अभी 70 पॉइंट्स बचा है, 70% बचा है. The 70% is inside within yesterday's range, ATR range. That is the reason you can expect the extension 2x of the IB.
I think this is clear. When IB is becoming narrow, you can anticipate trend day. That day, you must not go anywhere. You should be waiting for the big trade. This is for the same day. ओके, सेम डे के लिए हम इतना सर्कस करते हैं स्टडी करने के लिए. This is the narrow IB, and this is how trend day will happen. This is the narrow IB, and this is the trend day will happen. Uptrend day. This is the uptrend day. This is the downtrend day. This is the IB. IB breakdown, then continuation of the 2x. इधर से लेकर इधर तक 1x, इधर से लेकर इधर तक 2x. It is the downtrend day. Next is the double distribution day. See, double distribution is same as trend day, no changes. Double distribution is same as trend day, no changes. सिर्फ देखने से आपको चेंज लगता है. देखो इधर इन प्रीवियस एग्जांपल में क्या हुआ, आफ्टर द फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन, एक डिस्ट्रीब्यूशन मतलब दिस इज व्हाट, प्राइस गोइंग साइडवेज, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन. इसके बाद ब्रेक डाउन हो गए, इट वाज द डिस्ट्रीब्यूशन हैपेंड, ब्रेक डाउन हो गए, और पूरा दिन it was keep moving slowly या fastly, it was keep moving. This was the trend day. इसमें ट्रेंड डे को डबल डिस्ट्रीब्यूशन डे को फर्क क्या पड़ता है, ऑल द कैरेक्टर्स आर सेम, बट एक दो बार में इतना बड़ा मूव हो जाएगा और उधर साइडवेज पे स्पेंड करेगा प्राइस. In trend day, price might be moving very slowly. Big move will happen, or very big move will happen, and it will be keep moving until the end of the day. Until the end of the day, price will be keep moving. कुछ दिन में आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी will be moving 1000 points and 2000 and closing at the top of the day, closing at the bottom of the day. But डबल डिस्ट्रीब्यूशन डे में ऐसा नहीं होगा. इसमें एक ही बार में वो 2000 पॉइंट्स का मूवमेंट हो जाएगा, बाद में वो साइडवेज में घूमते रहेगा. पहला 1 घंटे और 2 घंटे साइडवेज जाएगा, और एक बार ऐसे रहेगा, वो बार में इतना बड़ा मूवमेंट, सारा मूवमेंट हो जाएगा, बाद में मार्केट विल गो साइडवेज. दैट विल क्रिएट डबल डिस्ट्रीब्यूशन. Now double distribution is separated by a single print. इधर एक डिस्ट्रीब्यूशन, इधर एक डिस्ट्रीब्यूशन. It means price is spending lot of time. So that is the double distribution. Nothing difference. Trending day, double distribution day, activity is same, but the speed of the movement will differ. That's all. So I will show you the example for double distribution. These are all the single distributions. This is the double distribution. आप देख सकते हैं. So one distribution happened here in this part, and here one more distribution happened. This is separated by a single pin. This is also double distribution. One distribution happened here, and one more distribution happened here. Always a distributions are separated by a single pin. ये याद रखना. This is a double distribution day. This is
This is also double distribution. ये भी double distribution है, but इसका single print नहीं है. Okay, so it will not be so reliable. I hope double distribution day का clarity आ गया. And you see this also double distribution. एक distribution इधर हुआ, one more distribution here. Okay, it is not a distribution. At the end of the day, it is pending. Sandeep Rudra, sir, you are saying we come to know at the end of the day. एंड ऑफ द डे आपको समझ में आएगा. एंड ऑफ द डे के पहले कभी आपका आईबी फार्म होगा, तभी आपको समझ में आएगा. दैट इज द रीजन यू आर स्टडिंग आईबी. आईबी साइज को इतना सीरियसली हम क्यों समझ रहे हैं? वी आर अंडरस्टैंडिंग द आईबी साइज टू प्रेडिक्ट द सेम डे मूवमेंट. ट्रेंड डे कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं? बाय अंडरस्टैंडिंग द आईबी लेस देन 30%. Sandeep Rudra, are you able to understand? Now you understood the different types of the days. Okay, these are the days which are tradable. आज के लिए ट्रेड करने के लिए ये हम समझ रहे हैं. These are tradable days. Next is non-trend day, which is non-tradable. ये non-trend day होता है. Non-trend day का मतलब क्या होता है? Here IB is narrow or moderate, just like trend day और नॉर्मल वेरिएशन डे का IB होता है, ऐसा इधर भी बनता है. It can be narrow or moderate IB, but how to predict this is going to be a non-trend day? Because that occurs just before the event. एक इवेंट होता है, say for example, tomorrow is RBI policy, or tomorrow is a company result, tomorrow is any announcement. So that day before, you can see it occurs before the event day. Okay, so event day before आप नैरो या मॉडरेट आईबी मिल गए तो ट्रेंड डे को एंटिसिपेट मत करना. ओके, so you can see this having narrow or moderate IB, and it occurs just a day before event day. No IB breakout occurs. क्या होगा? IB बनेगा तो price will never break the IB. Price will started to move inside the IB because nobody is ready to take the risk. Nobody is ready to take the market in single direction. How does he take the market in single direction when he don't know what will happen tomorrow? Nobody will participate, right? So मैं क्या कर रहा हूँ? If you can see my trades in the Telegram channel, I have reduced my trades. Yes or no? Why did I reduce my trades? The market is going sideways. It is waiting for some announcements. So whenever market goes sideways, FIS and DAs and smart money will stop trading. They will allow the retail traders to trade. क्या करेगा मार्केट में? रिटेल ट्रेडर्स आप जैसा बैठेगा और को उसको ऐसा what they feel like itchy. They wanted to take some trade. They wanted to be in the trade at every minute. So smart money will allow the retail traders to trade. Usually, so when retail traders are trading, they have strength to create maximum IB. That's all. They cannot expand the market beyond IB. So that is how smart money trade. हम ऐसे ट्रेड करते हैं स्मार्ट मनी के साथ. When smart money will not participate, IB will not break. When IB will not break, we people are not trading. That is how we filter our trading styles.
ट्रेड्स को ऐसे ही फिल्टर करते. Why I am not participating? Because I don't want to suffer a lot inside with the retailers. Because retailers क्या करेगा ना, रिटेलर्स एकदम प्राइस को एक डायरेक्शन में लेके जाने का ताकत नहीं होता है. If you look at the price action yesterday in the bank nifty, it never went up डायरेक्टली. वो ऐसे गए नीचे आए, वो ऐसे गए नीचे आए, ऐसे गए नीचे आए, ऐसे गए नीचे आए, and finally went up. But the movement was not in the momentum. It was very slow. That is what make difference between the regular traders and we order flow traders. We understand the activity of the retail traders and we will not be participating with them. उसके साथ हम पार्टिसिपेशन नहीं होता है. तो उसके साथ आप पार्टिसिपेट कर दिया तो आप वेट करना, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा वेट करना. Deepak, yes, you can do a selling of the options. You know, you can create the strategies and you can sell. Okay, no IB breakout will happen and the price rotates inside IB. उधर ही घूमते रहेगा and you must avoid trading this day. ऐसा डे को आप अवॉइड करना है. So there was a day in the Nifty which become narrow. देखो इधर, it was the day in Reliance also. निफ्टी में भी सेम था एंड रिलायंस में भी देख, ये एंड बी, दिस इज द आईबी. पूरा दिन उसका हाई भी ब्रेक नहीं किया, लो भी नहीं ब्रेक. दिस इज द नॉन ट्रेंडिंग डे. आप कुछ भी नहीं कर सकते. इट वाज द रेंज ऑफ जस्ट 20 पॉइंट्स. आप देख सकते हैं इट वाज द रेंज ऑफ 2950 एंड 2975, 25 पॉइंट्स. 25 पॉइंट्स के अंदर क्या ट्रेड ले सकते? आई होप यू अंडरस्टैंड. ओके, मैं रिलायंस में दिखाया आपको, निफ्टी में भी दिखाऊंगा. यू कैन सी हियर price went nowhere, it went. So this is called non-trend day. It will not be tradable day. You must avoid trading on the same day. This is the example. IB के अंदर ही पूरा बैलेंस क्रिएट कर. We also call this as a balance day and price rotation will happen within the initial balance. Next one is the neutral day. न्यूट्रल डे में भी क्या होगा? IB is narrow, IB is moderate, same. But see, what is, you can ask me, sir, what is the difference between this non-trending day and the trending days? तो मैं नॉर्मल या नैरो IB देख के मैं एक्सपेक्ट करके बैठा हूं सर बहुत बड़ा ट्रेड मिलेगा. द डिफरेंस इज trending day will come regularly, but non-trending day will come just one day before the event. That is the difference. Occurrence is different. Neutral day will occur on the event day. एक दिन का पहले अकर करेगा नॉन ट्रेंडिंग डे. न्यूट्रल डे विल अकर विद द सेम IB says on the event day. आज कोई अनाउंसमेंट हो रहा है, रिजल्ट्स हो रहा है, तो द सेम डे इट विल अकर. IB breakout occurs in the both the sides. IB breakout occurs in the both sides. तो इधर भी ब्रेकआउट करेगा और इधर भी ब्रेकआउट करेगा. जस्ट लाइक ये पागल 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 लोग कहते हैं ना, दे कैन टेक टू डिसीजंस. it take a decision to go upside, then reverse and take a go downside. It hits the upper resistances and reverses.
IB breakout होगा, then it hits any of the resistances nearby and reverses. Then it also breaks the IB low, and once again it hits the lower resistance, lower supports and reverses. Okay, it is not stop loss hunting. It is not stop loss hunting. Stop loss hunting is different. I will show you stop loss hunting also. It also hits the supports and reverses. Finally closes inside the IB. It is just like for funny, for fun. I am giving you an example for fun. Take this as a fun. Okay, maybe a male or female of this family. Consider this is a family. IB is a family. They go and marry some person. Okay, divorce, leave him, come back, and marry one more person. Leave him, come back, and started to stay inside their parents' family. Okay, did you understand? It is a simple example to make you understand. दो शादी करेगा, दो शादी में भी छोड़ के आ जाएगा और पापा का घर में रहेगा. Okay, this is the example. Now the supports and resistance can be 3 days or weekly supports and resistances. 3 दिन का high, 3 days high. I told you already. 2 days, 3 days, 5 days highs and lows will be very, very important references. ये 3 दिन का या 5 दिन का हाई टच करके रिवर्सल हो जाएगा, या 3 दिन का सपोर्ट्स या 5 दिन का सपोर्ट्स टच करके रिवर्सल हो जाएगा. This is the neutral day which occurs on the event day. Example is this. आप देख सकते हैं, it is the IB. IB low broken first, then reversed, broken high next, then came back and staying inside the home. You can also take an example. Try to go to a job, left this job, try to go to second job, left this job, and started to stay at home without doing anything. The closing will be very neutral, closing inside the IB. So this can also be like a doji pattern. This can also be like doji pattern. So this is the neutral day. Okay, because it is closing mid of the IB, because this is a neutral center day. It is exactly doji. One more way of day is there in the neutral day, that is neutral extreme day. न्यूट्रल एक्सट्रीम डे में क्या होगा, सिर्फ एक ही चेंज, क्लोजिंग पोजीशन ऑफ द क्लोजिंग. आईबी ब्रेक किया, नीचे आ गए तो ऊपर चले गए, ऊपर भी ब्रेकआउट कर दिया, बट क्लोजिंग हैपेंड इन दिस एरिया at one extreme, at one extreme. So this is called neutral extreme day. Naresh bhai, you cannot predict, sir. You cannot predict. This is unpredictable. That is the reason it is coming on the event day. You cannot predict. इसको आप predict नहीं कर सकते. That is the reason you are studying. You are going to use this for the future. Predict कब कर सकते हैं, उसको हम ट्रेड करते हैं. कभी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, उसको हम फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं. Can't we use a trailing stop loss on the neutral extreme day? प्रशांत भाई सुनो, इधर ध्यान से सुनो. We are studying all these day types to avoid our mistakes. फिर भी आपका क्वेश्चन कैसे है? So still you wanted to enter into the mistakes. हम इतना फिल्टर क्यों कर रहा है? To avoid doing mistakes. फिर भी मैं बोल रहा हूँ, न्यूट्रल एक्सट्रीम डे, न्यूट्रल डे इज द dangerous day, unpredictable day.
We are studying this because it is an unpredictable day, so we are avoiding this day. These are the 2 day types which we have to avoid. And you are asking me इसके अंदर मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करना है? मैं बोल रहा हूं दिस इज द रॉन्ग थिंग्स यू आर डूइंग. उसको निकाल दो, उसको निकाल के बाजू रखो. ओके, सही ट्रेडर कैस कब बनोगे, तो कब ट्रेड करना है, कब नहीं ट्रेड करना है, उसको समझोगे. The right trader will be always understanding when to trade, when not to trade. It is not hurry. मार्केट रहेगा, आपका पीछे से भी मार्केट है, आपके बाद भी मार्केट रहेगा. आपको बच्चों भी ट्रेड कर सकते हैं इसको, बट राइट ट्रेड लेने के लिए आप वेट करना पड़ेगा. Those who want to trade on the event day, definitely they are gamblers, definitely. अरे मैं जा रहा हूं सर, आई वांटेड टू ईट द मीट ऑफ द लायन. अरे इधर उधर बकरा है और मुर्गी है, उसको खाओ. Why do you want to eat the meat of the lion? Right? Okay, let us discuss the conviction. आपका ज्यादा conviction ट्रेंड डे में, डबल डिस्ट्रीब्यूशन डे में, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डे में. हाईएस्ट कन्विक्शन ऑन द ट्रेंड डे, little lesser on the double distribution day, and little lesser on the normal variation day. Okay, and normal day. And these are the non-trending and neutral days which should be avoided. उधर आपको conviction नहीं मिलेगा. Okay, so this is all about the very important days you must understand. Vishnu P, what is your question? And this is for today. Rest of the learning will be in the next classes. मैं कितना आपको सिखा रहा हूं, आप घर जाओ, इसको फाइंड आउट करो, ट्राई टू प्रेडिक्ट इट. ओके, दिस इज योर होमवर्क. Before trading we have to update all the business news. No, no, I never told my students to look at the news, look at the TV, look at that, and वो वर्ल्ड मार्केट को देखो, कुछ नहीं चाहिए. मैं आपको पहला ए से भी सिखा रहा हूं, देन आई विल बी फिल्टरिंग ऑल दिस, मेनी थिंग्स विल बी गेटिंग फिल्टर्ड. अभी देखो, नाउ वी हैव फिल्टर्ड सो मेनी डेज. 4 डे टाइप्स को लेके हम ट्रेड करते हैं. अनदर 2 to 3 days वी विल नॉट बी ट्रेडिंग. Jai, please come to the present. Please come to the present. You wanted to know which time frame is suitable. वो मैं बोलूंगा, अभी नहीं बोलूंगा, अभी नहीं बोलूंगा. Time will come. We have another 5 days to reveal all those. मुझे पता है आपका गलती कहाँ होता है, तो I will not let you to make that mistakes. मेरा काम क्या है, आप मुझे पैसे क्यों दिए हैं? वो सारा गलतियों को हटाने के लिए. आई एम नॉट हियर टू एक्सेप्ट वट एवर यू से. बोल दिया सर टाइम फ्रेम दे दो, सर टाइम दे, वो दे दो, ये दे दो. नो, मैं केयर देने वाला हूं, उसको लेना है. हाँ, ओके. So the session is over. I am just stopping the recording. Okay, I will take some doubts.